to the choir. आइए अपने आवाज उठाकर अपने हाथों को ऊंचा करके प्रभु की महिमा करेंगे। Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. The splendor of the King, clothed in majesty, let all the earth rejoice, let all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, and trembles at his voice. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. कितना महान है तू प्रभु। आइए हिंदी में गाते हैं। कितना महान है प्रभु, तू कितना महान है प्रभु। सारे ये कहे तू है महान, मेरा प्रभु। Yes, Lord. महान है प्रभु, तू कितना महान है प्रभु। सारे ये कहे तू है महान, मेरा प्रभु। सारे नामों सारे नामों पे ऊंचा नाम, स्तुति गौरव और सम्मान। मेरा दिल ये कहे तू महान, मेरा प्रभु। सारे नामों पे
with me how great is our अपनी God. आवाज उठाकर All will see how great I want you to visualize the name of Jesus is being spread everywhere, being lifted up. is our God. सचमुच प्रभु आपका नाम सब नाम में श्रेष्ठ नाम है। इस नाम को हम ऊंचा उठाते हैं प्रभु। तू बड़े हम गटे परमेश्वर। आपका वचन कहता है तेरे विरुद्ध कोई भी हथियार प्रबल नहीं होंगे। धन्यवाद देते इस नाम के लिए परमेश्वर। इस नाम के आगे हर एक घुटना टिकता है, हर एक ज़बान अंगीकार करता है कि तू प्रभु यीशु है। धन्यवाद मेरे प्रभु। हमारी स्तुति हमारी आराधना को तू ग्रहण कर मेरे परमेश्वर। यीशु के नाम में हम मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। आइए यीशु मसीह के लिए एक जोरदार ताली देंगे। प्रभु का वचन कहता है कि रोमियो का 8:31 कहता है कि यदि परमेश्वर हमारे साथ में है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। मैन Romans 8:31 says, "Is God be for us? Who can be against us?" Amen. Worship is all about glorifying Jesus. Amen. Let's leave all our problems, leave everything aside. आपकी चिंताओं को बाजू में छोड़े. This is the time to give glory to only Him because He deserves the glory, church. Amen. Come on, are you ready to worship God? Water you turn into wine. Open the eyes of the blind. There's no one like you. None like you. Into the darkness. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you. There's none like you. Come on, holy. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Water you turn into wine. Open the eyes of the blind. There's no one like you. None like you. None like you. Into the darkness. Into the darkness you shine. Out of the ashes you rise. There's no one like you. There's none like you. None like you. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. And who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? And if our God is for us, then what could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? And if our God is for us, then what could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? Then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? What could stand against?
turn into wine. Open the eyes of the blind. There's no one like you. None like you. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you. None like you. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. For us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? And if our God is with us, then what could stand against? Is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Yes, Lord, you are awesome in power. God, You are mighty God. You are the great I am. You are the good shepherd. our God is healer, You are a loving Father. awesome in power. Our God, our We exalt your name, Lord. We magnify your name. There's none like you. You are the King of kings. You are the Lord of lords. सारी महिमा सारा आदर तुझे देते हैं प्रभु। हमारे विरोध कितने भी हत्यारा है, लेकिन आप उसे प्रबल होने नहीं देंगे। Isaiah 54:17 says, "No weapons fashioned against you shall prosper." Amen. Let's take God's word personally. Let's believe. मैं नहीं जानती आप किस चीज से गुजर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आपके साथ में। When the darkness falls, it won't prevail. My son knows only how to triumph. My God will never fail. My God will never fail. My God will never fail. Once again, no weapons. The weapon may be formed, but it won't prosper. When the darkness falls, it won't prevail. But my God, I serve knows only how to triumph. come on, boldly, my God will never fail. My God will never fail. My God, oh my God will never fail. Come on, let's boldly declare. I'm gonna see a victory.
your victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see your victory. I'm gonna see your victory. For the battle belongs to you, Lord. There's power in the mighty name of Jesus. Every war and every war he wages, he will win. And I'm not backing down from any giant. Come on, declare it. 'Cause I know how the story ends. Yes, I know how the story ends. I'm gonna see your victory. I'm gonna see your victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see your victory. I'm gonna see your victory. For the battle belongs to you, Lord. मेरा यीशु लड़ता मेरे लिए। मैं देखूं अपने जीत को, मैं देखूं अपने जीत को। मेरा यीशु लड़ता मेरे लिए। I'm gonna see your victory. I'm gonna see your victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see your victory. I'm gonna see your victory. For the battle belongs to you, Lord. आइए अपनी आवाज उठाकर I'm gonna see your victory. आप अपनी आवाज उठाइए। See your victory. For the battle belongs to you, Lord. Declare it by faith. I'm gonna see your victory, Lord. See your victory. I'm gonna see your victory. For the battle belongs to you, Lord. आइए अपने आंखों को बंद रखेंगे, प्रभु की आराधना में चलेंगे। प्रभु हमारा परमेश्वर पवित्र ईश्वर है। He is holy forever. God says, "Be holy as I am holy." Thousand generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all have gone before us, and all who will believe would sing the song of ages to the Lamb. A thousand generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all who've gone before us, and all who will believe, will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all, and the angels cry, oh,
cry. Holy, all creations cry. Holy, you are lifted high. Holy, holy forever. If you've been forgiven and if you've been redeemed, we'll sing the song forever to the Lamb. And if you walk in freedom and if you bear His name, we'll sing the song forever to the Lamb. Sing the song forever and amen. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all, and the angels cry, holy. All creations cry, holy. You are lifted high. You are lifted high. Holy, holy forever. And the angels cry, holy. All creations cry. Everyone, let's lift the voice. You are lifted high, holy, holy forever. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all, and the angels cry, holy. All creations cry, holy. You are lifted high, holy, holy forever. And the angels cry, holy. All creations cry softly. holy. You are lifted high, holy, holy forever. Oh, most beautiful among thousands and thousands
My beloved is the most beautiful among thousands among thousands and thousands. and thousands. The Yeshua. every hand lifted up high on the sky. Yeshua, Yeshua. अपने हाथों को ऊपर उठाकर Yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. Yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. Yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. Yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. Yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. Yeshua. Yeshua, यीशुआ मसीहा का नाम लीजिए। यीशुआ मसीहा का नाम सब नामों में श्रेष्ठ नाम है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, परम प्रधान ईश्वर, Lord, you're doing something great. Awaken supernatural faith. Your glory is tangible in this place. Lord, you are doing something great. Lord, you're doing something great. Awaken supernatural faith. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest himself. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest himself. Your glory
tangible in this place. Lord, you're doing something great. Awaken supernatural faith. Glory is tangible in this place. Lord, you're doing something great. Lord, you're doing something great. Awaken supernatural faith. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest himself. Worship him, Lord. We worship you. We worship you, Lord. Adonai will manifest himself. For the last time, your glory. Your glory, everybody, is tangible in this place. Lord, you're doing something great. Awaken supernatural faith. Your glory, everybody, is tangible in this place. Lord, you're doing something great. Awaken, Lord. Awaken supernatural faith. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest himself. Father, we just want to thank you for this wonderful time. पिता इस सुंदर समय के लिए तुझे धन्यवाद देते We हैं। have a faith racing in our spirit हमारी आत्मा में विश्वास जाग रहा है प्रभु that you have accepted our worship. कि आपने हमारे आराधना को स्वीकारा And we believe, Lord, your supernatural manifestation will take place in every house, in every family, in every individual, O Lord. और हम विश्वास करते हैं कि अलौकिक रूप से प्रभु आप हमारे जीवन में, हमारे परिवार के जीवन में, हम सबके जीवन में आप प्रकट होंगे। Lord, you are my Adonai. तू हमारा अदोनाय You are है, my El Shaddai. तू मेरा एल शदाय है, You are our Jireh. तू हमारा हीरे है, You are the God who fights every battle in our lives. तू आप परमेश्वर है जो हमारे सारे लड़ाइयों को And you लड़ता said, है। Lord, the battle belongs to you and the victory belongs to us. प्रभु आप कहते हैं कि लड़ाई तो हमारी है लेकिन युद्ध तो आप करते हैं Lord, और हमारे लिए जय दिया है। And Lord, the battle belongs to you and the victory belongs to us. युद्ध आपका है, हमारे लिए केवल आपने जय रखा है। And Lord, we thank you as we walk by faith, as we learn faith, the Lord, we believe that supernatural work of God will be seen in our lives today. और प्रभु जैसे हम इस विश्वास के सफर में आगे बढ़ेंगे प्रभु, हम आपके अलौकिक कामों को हमारे जीवन में अनुभव Take us करेंगे। into the journey of blessings, O Lord. आशीषों के सफर में आप Take हमें us ले into the चल। journey of breakthroughs, Lord. हमारे जीवन में जयवंत यश ला Lord, take us through the journey of breakthroughs that we have never seen in the past. प्रभु एक ऐसे सफर में हमें ले चल जो ऐसे जय को हमारे जीवन में हम कभी नहीं अनुभव Thank you, किया। Lord, you removed the wilderness from us. प्रभु हमारे जीवन के सारे मरुभूमि को निकालने के लिए Thank you, धन्यवाद। Lord, you jungle. Thank you, Lord, you removed all the
desert from our lives. हमारे जीवन के सारे रेगिस्तान को निकालने के लिए And धन्यवाद। Lord, thank you for making the way in the wilderness. प्रभु हमारे लिए रास्ता बनाने के लिए Thank you for धन्यवाद। the springs of the living water is springing out in our lives, O Lord. प्रभु उस जीवन का सोता पानी हमारे अंदर से निकालने के लिए धन्यवाद We are प्रभु। looking towards you, Lord. हम तेरी ओर ताकते हैं मेरे Prepare our परमेश्वर। hearts. हमारे मनों को तू तैयार कर Prepare our प्रभु। will and mind and emotions. हमारे मन, हमारे प्राण, हमारी इच्छाओं को तू We तैयार bind our कर। mind to the mind of Christ. हमारे मन को हम यीशु के मन We से bind our will बांधते to the perfect will of God. हैं। हमारी इच्छाओं को प्रभु के सिद्ध इच्छा में We बांधते bind our हैं। emotions to the word of God and to the Holy Spirit. हमारे भावनाओं को पवित्र आत्मा के वचन और पवित्र आत्मा के साथ As बांधते we are हैं। sitting at the Lord's table, और जैसे तेरे मेज के पास हम आए हैं मेरे Lord, prepare परमेश्वर, our hearts today. आज हमारे मनों को तू तैयार Prepare our कर। mind today. आज हमारे हृदयों को तैयार Prepare कर। us, O God, हमें तैयार कर so मेरे that, प्रभु, Lord, we can experience that supernatural presence in our lives. ताकि ये अलौकिक अनुभव उपस्थिति को अनुभव कर सके आज You हमारे looked at जीवन the में। lepers and they said, "Be thou clean." आपने कड़ियों को देखकर कहा चंगे हो जाओ। If the leper is worthy to be cleansed, Lord, Father, we come before with a humbleness and we ask for cleanliness spirit to come in और us. प्रभु जैसे वो कोड़े चंगाई पाने के योग्य थे प्रभु, हम तेरे सामने नम्रता से आते हैं प्रभु, हम कहते हैं हमें तो शुद्ध कर As we आज। take part in the bread and the cup today, आज जैसे इस रोटी को और प्याला में हम भाग transform लेंगे, our lives, Lord, हमारे जीवन को तो बदल दे as never before. पहले से कैसे In जैसे नहीं हुआ Jesus' name था। we pray. यीशु के मूल्यवान नाम में हम मांगते हैं। Amen. Please be seated for a minute. एक मिनट की Okay, let's turn our Bible too as we preparing our hearts to take part in the bread. Some of the people, Bunny, you can bring them here. There are chairs. कुछ लोग आगे बैठ सकते हैं सीट से यहाँ पे। So why struggle there? There are chairs here, please. आगे बहुत कुर्सियाँ खाली हैं यहाँ पे। Yeah. Please come forward. You are precious to us. Shreya, can you put 26 of Matthew? Before we take part in the bread and the cup, रोटी और कटोरे में भाग लेने से पहले I would like to read a scripture. मैं एक वचन पढ़ना चाहूँगा। Matthew 26, please. मत्ती का 26:26। As they were eating, Jesus took bread, blessed and broke it, and gave it to the disciples and said, "Take, eat, this is my body." मत्ती 26:26 ऐसा कहता है कि जैसे जब वे उनसे वो खा रहे थे तो यीशु मसीह ने उनसे कहा, रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़कर चेलों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है। 27. Then 27। Jesus took a cup and thanked God for it and gave it to the followers. He said, "Every one of you drink this." और फिर यीशु मसीह ने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो। 28. For this is my blood for the new covenant, which is shed for many for the remission of sins. क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों के क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। 29. But I say to you, I will not drink of this fruit of the vine from now on until that day when I drink it new with you in my Father's kingdom. मैं तुमसे सच कहता हूँ कि दाख का ये रस उस दिन तक कभी न पीऊंगा जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज में नया न पीऊं। And after singing a hymn, and they went out to the Mount of Olives. फिर वे भजन गाकर जैतून पहाड़ पर गए। I will not preach today because आज we मैं have प्रचार- already आज मैं प्रचार नहीं करूंगा, Pastor Andrew to preach, पास्टर पर प्रचार करने वाले। and I want to just lead you into the taking of the bread and the cup. और इस रोटी में और कटोरे में आपको मैं आगे लेकर जाना चाहूँगा। And two things I want to remind you दो before you चीज़- take bread and the cup. ये रोटी और कटोरा लेने से पहले दो चीज़ें आपको याद दिलाना चाहता हूँ। It is for those who know the Lord,
and willing to partake in the body of Christ. वो उन लोगों के लिए है जो प्रभु को जानते हैं और उसमें भाग The लेने की Bible इच्छा says, रखते हैं। Jesus said, remember. यीशु मसीह ने कहा स्मरण कर। What do remember? तो किस बात को आप याद Once करेंगे? upon a time I was in the world. एक दिन मैं संसार में था। I did not know about the bread and the cup. रोटी और कटोरे के बारे में मुझे पता नहीं था, But somebody shared the gospel और किसी ने मुझे सुसमाचार and I शेयर किया came to know about the Savior. और मुझे उद्धारकर्ता के बारे में पता चला। So I accepted him as my personal Savior. तो इसीलिए मैंने उसे अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। And now I want to live in him and he has to live in me. अब मैं उसमें जीना चाहता हूँ, वो मुझ में जीना So चाहता there है। is one source that Jesus gave us. तो हमें यीशु मसीह ने एक सूत्र दिया है। Every time you come to the Lord's table, हर समय जब आप प्रभु के मेज के पास you आते हो, remember his death, burial and resurrection. यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने और जी Means उठने को याद He करते died हैं। for your sin on the यानी cross वो of मेरे Calvary. पापों के लिए वो कलवरी क्रूस पे मरे, And he was buried for our sins. मेरे पापों के लिए वो गाड़ा गया And he was resurrected to give us a new life. और मुझे नया जीवन देने के लिए वो फिर से जी What a उठे। God we serve. कितना अच्छा परमेश्वर जिसकी हम सेवा करते Remembering हैं। his death, burial, resurrection, we come to the Lord's table with reverence and gratitude, and with all respect, we take part in his body, in his blood. यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने को याद रखते हुए और एक धन्यवादित हृदय लेकर हम उसके मेज पर आते हैं और उस नए जीवन को पाते हैं। I always say, not once in a month in the church, whenever the disciples they gather, apostles they gather, they broke the bread, they sang hymns. और मैं ऐसा कहता हूँ कि केवल महीने में एक बार कलीसिया में नहीं, लेकिन जब भी चेले एक साथ मिलते थे वो रोटी तोड़ते थे और एक साथ में प्रभु के That मेज में means भाग लेते थे। God is trying to tell you, यानी प्रभु आपसे ही कहना चाहते whenever हैं, you come together in your house, in your family, जब भी आप अपने घरों में एक साथ मिलते हो, अपने परिवार में एक साथ you इकट्ठे need होते to हो, have a Lord's table. प्रभु का मेज होना जरूरी है। Amen. We have all the other tables in our lives, हमारे जीवन में बहुत सारे मेज रखते हैं हम, but Lord's table is a key because what He has done for your life. प्रभु का मेज ही वो चाबी है, जो बात प्रभु ने हमारे लिए किया उसे याद Today, रखें। as we take part in the bread and the cup, आज जैसे इस रोटी में और प्याला में हम भाग लेते हैं, I'll give you a few minutes or 30 seconds, 1 minute. You just prepare your mind, you prepare your heart. मैं 30 सेकंड आपको दूंगा या 1 मिनट दूंगा, अपने मनों को तैयार कीजिए। Remember those days, how you gave your life to Jesus. उस दिन को याद करें जब आपने अपना जीवन यीशु को अर्पित किया था। If there is any disconnection, अगर कोई डिस्कनेक्शन यानी कनेक्शन टूट चुका today है, you can reconnect with the Lord. तो आप वचन के द्वारा उसके साथ फिर से जुड़े। Amen. That's the grace that He gives us. यही अनुग्रह प्रभु हमें देता है। Amen. I always say, मैं हमेशा कहता हूँ, you know, when people pray, God is not answering my prayers. हम प्रभु लोग जब प्रार्थना करते हैं, मेरी प्रार्थना क्यों सुनी नहीं जा No, रही no, है? no, no, no. God is answering your prayers, but you don't see it. प्रभु ने तो उत्तर दिया लेकिन आप How? नहीं देख रहे हो। कैसे? When you pray, जब आप प्रार्थना करते हो and Jesus is every time going and knocking at the heart of their door. और यीशु मसीह हमेशा उनके दिल के हृदय पर खटखटा रहे हैं, But you know, that person whom you are praying also has to open the door for him to welcome. और जो व्यक्ति के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन उसने भी अपना दिल का दरवाजा खोलना जरूरी है, उसको pray, वेलकम करना है। You pray, आप प्रार्थना करते He हो, goes and knocks at the door. वो जाता है उनके दरवाजे पे खटखटाता He है। doesn't open, He comes back to you. अगर वो दरवाजा खोलेगा नहीं, यीशु तुम्हारे पास And वापस आ today, जाएंगे। the same Jesus, आज वही यीशु, the same Yeshua Messiah, यह वही यीशुआ is मसीह knocking at your doors. आज आपके दरवाजों को खटखटा रहा Where the है। link is gone, you want to relink and you want to bless you. जहाँ पे वो लिंक टूट चुका है, वो फिर से उसको जोड़ना चाहता है, तुम्हें आशीष देना चाहता है। Amen. Let's prepare ourselves. आइए अपने आप को तैयार Say करेंगे। with me, Lord, prepare me. कहो मोरे प्रभु तू मुझे तैयार कर, ऐसा कहो। Lord, in the areas of my life where I have disconnection with you, Lord, this morning you connect me, Lord. मेरे जीवन के वो जो भाग जहाँ से मैं आपके साथ में मेरा जोड़ टूट चुका है, उस एरिया को, उस क्षेत्र को फिर से तू जोड़ Lord, दे मेरे where प्रभु। are the dark areas are there in my life, let your light shine there. प्रभु मेरे जीवन में जहाँ जहाँ काला क्षेत्र है, वो वहाँ तेरा उजाला In है। your presence, as I take bread and the cup today, प्रभु आपके उपस्थिति में जैसे इस मेज में मैं आज भाग लूंगा, transform my life, Lord. मेरे जीवन को तू बदल दे मेरे प्रभु। Transform my life, Lord. मेरे जीवन को बदल मेरे I want to always live in you and you in me, Lord.
मैं चाहता हूँ कि हमेशा मैं तुझ में रहूं, जीऊं और तू मुझ में बना This is the रहे। source that you have given to us. और यही सूत्र आपने हमारे लिए Today, दिया as we है। remember you आज जैसे हम आपको याद by करते हैं taking the bread and taking the cup, रोटी और प्याला में भाग लेने से let there be a transformation in my life. Lord. हमारे जीवन में एक बदलाव आए। In Jesus' precious name, we bless and यीशु pray. के मूल्यवान नाम में हम मांगते हैं। Amen. Shall we all rise again as the आइए, song is going on? सब अपने पैर पे खड़े रहेंगे जैसे गीत गा रहे क्वायर। So we'll come and fetch the bread and the cup. आइए रोटी आगे लेके, जो पीछे के लोग आते हैं यहाँ से चाहिए प्लीज, आगे से ही। You are Carol, the sir. one at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealing you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Thank you, Lord. Death could not hold you. Yes. We tore before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful. Death could not hold you, the wind tore before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. And you have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name
powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. As the elements are in our hands, जैसे ये पात्र हमारे हाथ में है, the bread that you are holding, that is not Jesus. रोटी जो आप हाथ में पकड़े वो यीशु नहीं है, The cup that is in your hand, that is not Jesus' blood. वो जो ये प्याला जो आपके हाथ में वो यीशु का लहू नहीं है। It is in the remembrance that Jesus made a covenant, that we remember how he redeemed us and we give glory to him. लेकिन उसके स्मरण में यीशु ने हमें कैसे अपने लहू के वाचा के द्वारा हमें छुड़ाया, उस बात को याद करना है। Father, thank you for the bread which represents your body. पिता धन्यवाद देते इस रोटी के लिए जो आपका शरीर का प्रतीक है। Thank you for the cup which रोटी, reminds us the blood shed on the cross to redeem us. रोटी के लिए धन्यवाद जो आपके लहू को याद दिलाता है, Thank you for the जिसने हमें blood छुड़ाया। that redeemed us from all our curses. धन्यवाद आपके लहू के लिए जिसने हमें सारे श्रापों से मुक्त Today as we किया है। take part in the bread and the cup, आज जैसे इस रोटी में और प्याला में हम भाग लेते हैं मेरे let our प्रभु, spirit be transformed. हमारी आत्मा बदल Let our जाए, soul be transformed. हमारे प्राण बदल जाएं Let our प्रभु, bodies be transformed. हमारे शरीर बदल जाएं, Because we are living in victory in Jesus. क्योंकि यीशु में हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। Thank you, Lord, for this bread and the cup. धन्यवाद इस रोटी और In कटोरे Jesus' के, name we यीशु pray. के नाम में हम मांगते हैं। Let us say thank you, Jesus, and remember this death, burial, and resurrection. आइए थैंक यू जीसस बोलेंगे, यीशु मसीह के मारे जाने, And गाड़े जाने, take पुनरुत्थान part को in the याद bread करेंगे। and followed by the cup. और उस पहले रोटी को लेंगे, फिर बाद में कटोरे में सब एक Thank साथ में you, भाग Jesus. लेंगे। Father, we also pray there are many people has to be baptized. Many people has to come to the knowledge of Christ. We pray those house members, family, neighbors be saved quickly in these last days. And we believe that, Lord, you will bring them one day to the house of the Lord. Amen. And they will also experience and taste the love of God and the joy of the Holy Spirit. I pray that the hand of God will be upon their lives, O God. Amen. You take all the glory. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Please be seated. You all too. The table on the side. Yeah. Wait, don't push. Don't push. Utana. Amen. Praise the Lord. God is good. प्रभु भला है। So, how many of you are happy this morning? Our mentor, our father is in the house. और हमारे अगवा, हमारे पिता घर में आए And हैं। it is so joy to have our mentor, our father, to minister to us, to you all. और हम कितनी खुशी की बात है कि हमारे अगवा, हमारे पिता आप सबको जो है अगुवाई करने के लिए यहाँ पे आए हैं। I had two spiritual fathers in my life, मेरे जीवन में दो आत्मिक पिता थे, and they both are dead and gone. दोनों मर चुके हैं, गुजर And I was चुके हैं। praying for a long time, Lord, somebody should mentor me, somebody should be above me, somebody should talk to me about your word. काफी समय से मैं प्रार्थना कर रहा था कि मेरे ऊपर प्रभु मुझे कोई चाहिए तो मुझसे जो बात कर सकते, मुझे तेरे वचन के द्वारा समझा सके। So 14 years back, as we were crying, the Lord brought Pastor Andrew from Israel to our lives. और जैसे 14 साल पहले हम प्रभु के सामने रो रहे थे इस विषय के बारे में, और प्रभु ने पासवान एंड्रू को 14 साल पहले हमारे जीवन में लाए। And Pastor Andrew has been a great blessing. And whenever we have troubles in the church, or whenever we have troubles outside the ministry, when we ask him, immediately he counsels and prays for us. और जब भी पासवान हम जो है हमारे कलीसिया में या हमारे निजी जीवन में कोई भी तकलीफ या कोई परेशानी हो तो हम तुरंत उनको जो है सेवकाई के विषय में, पर्सनल सब चीज़ में हम उनको फ़ोन करके बोलते हैं, तो तुरंत वो हमारे लिए प्रार्थना करता है। And you know, that's how the Father always treats us. और पिता ऐसा ही बर्ताव करता है अपने बच्चों I के can't go to Israel every Sunday साथ। हर इतवार को मैं इजराइल नहीं जा सकता।
to receive the word. But वचन yes, पात्र yes, many times it is far, but we have to pay the price to receive a greater blessings. इसलिए अगर बड़ी आशीषों को पाना है तो बड़ा दाम चुकाना जरूरी रहता है. Amen. And today we can see from last 14 years, God is guiding through Pastor Andrew in our lives. और हम देख रहे हैं कि पिछले 14 साल से प्रभु हमें मार्गदर्शन कर रहे पास्टर एंड्रू के And praise God, today the father of this house is in our midst. और हम प्रभु को धन्यवाद देते घर का पिता हमारे बीच में Amen. आज Come on, है. somebody say amen. Hallelujah. It's a privilege for us to honor. और ये बहुत ही सौभाग्य की बात है. And I believe that the word is not only for me, it is for the entire और church. मैं विश्वास करता हूँ वचन केवल पासवान के लिए नहीं लेकिन पूरे So कलीसिया without के लिए. wasting the time, over to Pastor. Thank you.